Thank you very much, you all respected guests. बहुत लंबा अंग्रेज़ी इंट्रो था और मेरी अंग्रेज़ी ख़त्म हो गई है थोड़ी सी, so I would prefer कि हम थोड़ा सा उर्दू इंग्लिश में बात करें ताकि हमारे स्टूडेंट्स को और हमारे अटेंडेंट्स को अच्छे तरीके से समझ आ सके. So इस पैनल का सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव ये है, I try to invite people from academia and from the industry and from the digital era कि हम बैठ के थोड़ा डिस्कस करें कि क्रिएटिव इकोनॉमी में टेक्नोलॉजी का क्या किरदार आगे आप लोग देखते हैं एज एन एजुकेशनिस्ट एंड एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट. सो मैं अपनी डिस्कशन का स्टार्ट बहुत ही कन्वेंशनल बेसिक सवाल से करना चाहता हूँ ताकि एक कॉन्टेक्स्ट बिल्ड हो सके हमारी ऑडियंस के लिए. सो आई विल स्टार्ट विद सर RM नईम. व्हाट इज़ आर्ट इन योर ओपिनियन? आर्ट है क्या? क्योंकि आम बंदे को आर्ट की बड़ी डिफरेंट डेफिनेशंस पता हैं. एक तो वही डेफिनेशन है जो हिस्ट्री ने हम सबको बताई है और हम बड़े फर्म बिलीवर हैं उस बात के कि आर्ट ये होता है, लेकिन आज के आर्टिस्ट का काम ये नहीं है कि उस आर्ट को सिर्फ इंडोज़ किया जाए. कल का आर्ट कैसा होना चाहिए, आई थिंक उसकी बेसिक जिम्मेदारी ये है. उन लोगों ने भी आज के आर्ट के बारे में सोचा था कि आज आर्ट कैसा होगा, लेकिन अपने वक्त के साथ जस्टिस करते हुए सोचा था. और उसमें जहाँ तक टेक्नोलॉजी की बात है तो टेक्नोलॉजी के बग़ैर आज का तसव्वुर मुमकिन नहीं है, आज जीना मुमकिन नहीं है और कल तो आप सोच ही नहीं सकते. और बहुत सारे लोग जब आर्ट को डिफ़ाइन करने लगते हैं तो वो सिर्फ पेंटिंग की हद तक महदूद रखते हैं. तो मेरा नहीं ख्याल कि आर्ट सिर्फ पेंटिंग है. बेसिकली आर्ट एक सोचने का तरीका है कि आप कितना क्रिएटिव, कितना आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं और किस तरह से आप चेंज लेके आते हैं, वो सोशल हो या किसी एक एलिमेंट या किसी एक चीज़ के बारे में हो. तो उसी से जब क्रिएटिव लोग मिलते हैं और क्रिएटिव एंड्योर्स ओपन होते हैं, वो बेशक लिटरेचर में हो, आर्ट में या किसी भी साइड पे जो सोचने वाले लोग हैं, आई थिंक वही रिस्पॉन्सिबल हैं आने वाले बेहतर कल के. और एक बड़ी पुरानी एग्जांपल है कि जब आप 2+2 करते हैं तो 4 ही होता है. तो 4 जो कहता है उसकी मेमोरी अच्छी है या वो थोड़ा सा कंप्यूटर है, लेकिन जो 4 को 6 बना सकता है या जैसे 6 मिलियन बना सकता है वो आर्टिस्ट है. तो उसके बीच में एक आइडिया है कि वो उसको मल्टीप्लाई किस तरह करेगा. तो आई थिंक हर वो शख्स जो मल्टीप्लाई करना जानता है, जो आउट ऑफ द बॉक्स और फ्यूचर को देखना जानता है और एग्जीक्यूट करने की सलाहियत भी रखता है, मेरा ख्याल है वो आर्टिस्ट है, वो जिस मर्जी फील्ड से हो. थैंक यू. डॉक्टर सारा, व्हाट इज़ योर टेक ऑन आर्ट? आप क्या समझती हैं कि आर्ट एक्चुअली क्या है? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. मेरे ख्याल में आर्ट एक आपका ज़ाती एक्सप्रेशन है और अगर आप उसको बना के कोई इमोशन किसी के अंदर इंस्टिगेट कर सकें तो वो आर्ट है. मगर इमोशन तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले भी आर्ट वर्क क्रिएट कर लेते हैं, बट मेरे ख्याल में इमोशन एक जर्नल आने के बाद अगर आप उसके अंदर फीलिंग्स किसी के अंदर इंस्टिगेट कर सकें तो वो मेरे लिए आर्ट है. यहाँ आने से पहले मैं आई डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले आर्ट वर्क्स के ऊपर, और मैं जितने भी वो आर्ट वर्क्स देखे उन्होंने मेरे अंदर इमोशन तो इंस्टिगेट की, बट कहीं वो मेरे अंदर फीलिंग्स इंस्टिगेट करने में कामयाब नहीं हुए. तो मुझे कहीं लगा कि अगर आपका इसको हम आगे डिस्कशन को लेके चलें, मेरे ख्याल में टूल को ज़रूर यूज़ करना चाहिए, बट जो ह्यूमन क्रिएटिविटी है वो मेरे ख्याल में ह्यूमन्स उसको कैसे उस टूल को यूज़ करते हैं वो ज़्यादा अहम है. और हम आने वाले सालों में वो कर सकेंगे कि नहीं, दैट इज़ समथिंग वी ऑल नीड टू थिंक अबाउट. Okay, excellent. So we will come to artificial intelligence. Sir Rashid Rana साहब, what is art in its original form? अभी हम artificial intelligence पे भी बात करेंगे because सारा सेशन ही उस पे है. Conventionally आपके नज़र में art है क्या? First of all, I think most of us believe art has been there forever. But art as we know it with the capital A, it is a very recent idea, only 150 years old. All the creations from the past, images and objects that we see historically, whether it's cave painting or Sistine Chapel or artifacts from the past, that we very conveniently refer as art, they were not produced with the intention of what we call art now.
So we have a lens of art that was been invented in the last 150 years, and we call those things art. They did not mean it to be, they did not mean it to be art the way we define art in our minds. However, there can be overarching commonalities throughout the history. In Aristotle's words, the idea of mimicking. So perhaps even if we have to use the term art very loosely across the times and regions, is the very idea of mimicking life. It's common to all kind of what we call art. And the second most important thing perhaps, which lines through across the ages, is the idea of poetics. When we change the structure of something, if we say he goes to school, it's prose, but when we say school he goes to, we change the structure and suddenly there's something new came up, something poetic, something out of the ordinary. And I think that's perhaps in a very loose and broad sense makes art what art can be. So what we are producing now with the intention of art, who knows people in the future, what are they going to call that? You spoke about AI creating art which mimics, which resembles art, which resembles artistic painterly techniques. It may not be considered as much art as some of these startups from this time. Maybe they're changing the structure of how we think more effectively than what we are creating in the name of art. लेकिन आपकी इस बात से मुझे एक और मेरा सेकंड क्वेश्चन ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो गया है कि एक अरसा तक आर्ट एंड क्राफ्ट की डिबेट रही है, उसको हाउ डू यू डिफाइन, मतलब व्हाट इज आर्ट एंड व्हाट इज क्राफ्ट इन योर ओपिनियन? क्योंकि अब तो ये आर्ट क्राफ्ट टेक्नोलॉजी आ गई ना, तीसरी भी डोमेन आ गई है एक. Yeah, I think it's before I comment on that, I think it's a very redundant binary. I think we should do without it. It's a very colonial idea, because when a power structure had to be created, some people who had a superior order and role to play, and some others had some sort of labor-intensive jobs to do. I think we should do without that. Just because somebody is working in a certain medium, it doesn't guarantee that it doesn't have the richness of content. People who claim to creating art might be producing something very not so effective, not so creative. And also and also in terms of, there's a romantic idea, romanticism attached to the whole notion of craft. We often say that we should protect certain skill sets, certain practices. I think things that will survive will survive. I mean, there will be time that people used to say we should save cinema hoarding painters. And now they're producing flex printing, and their sons and their offsprings now creating photoshopped images. And there will be a time when there will be holographic or non-tangible imagery. We'll be talking about saving flex artists, or we'll be talking about saving plastic artists, plastic craft persons. But anyway, as a whole, I don't like this divide of art and craft. I think it's a very colonial idea. Okay. Let's take industrial perspective. Guddu, आप क्या कहती हैं कि आप तो as a professional business entrepreneur, उसके अंदर आर्ट की ज़रूरत भी होती है, क्राफ्ट की ज़रूरत भी होती है, और व्हाट डू यू थिंक, आर्ट और क्राफ्ट के अंदर क्या फ़र्क है और क्या हेयरलाइंस हैं? मैं बिल्कुल एग्री कर रही हूँ आपकी ओपिनियन के साथ कि हमने काफ़ी क्लोनलाइज करके रखा है आर्ट को, और वैसे जनरली अब तक मेरा परसेप्शन ये था और अब थोड़ा और बदला है कि आर्ट एक एक्सप्रेशन है और क्राफ्ट एक स्किल है. लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जिनको हम आर्टिस्ट डिक्लेयर कर चुके हैं उनमें क्राफ्टमैन नहीं है, और जिनको हम क्राफ्टमैन डिक्लेयर कर चुके हैं उनमें आर्टिस्ट नहीं है. सो जब कोई क्राफ्टमैन अपने क्राफ्ट के ज़रिए कोई कुछ एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है, कुछ इनोवेट करने की कोशिश करता है, तो मेरे लिए आर्ट है. और जब कोई आर्टिस्ट अपने एक्सप्रेशन को भूल के अपनी स्किल को कैपिटलाइज करने के लिए रिपीटेडली एक फिक्स्ड फार्मूलाज के साथ कुछ रिपीटेडली बनाया जाता है, तो वो मेरे लिए समहाउ आर्ट जैसा क्राफ्ट जैसी कोई चीज़ है. आई थिंक बड़ा क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू आप दे रही हैं, इसके ऊपर एक डिबेट पूरी सेपरेट हो सकती है. सो आप ये कह रही हैं कि
جو آرٹسٹ ریپیٹڈلی ایک میڈیم اور ایک ہی اسٹائل میں کام کرے جاتے ہیں وہ آپ کے لیے ایک طرح کے کرافٹ مین ہی ہوتے ہیں. سو اٹس اے سیپریٹ ڈبیٹ گائز, سو ابھی ہم اس پہ نہیں جائیں گے. اور سر عارم نعیم سے میں سوال کروں گا, ٹیکنالوجی کی طرف بڑھتے ہیں ذرا, کہ اب جیسے میں نے بھی اپنے کی نوٹ میں ذکر کیا, اینڈ دین جنرلی پوری آرٹ کمیونٹی کے اندر دیر از اے لاٹ آف بز آج کل کہ یار یہ جو مشین جنریٹڈ امیجز آ گئے ہیں یہ آرٹ ہے یا نہیں ہے. نہ صرف پینٹنگز آ گئی ہیں بلکہ کمرشل ڈیزائن, فوٹوگرافی, فلمنگ, ایڈیٹنگ, سب کچھ آرٹیفیشیل انٹیلیجنٹ اور مشین جنریٹڈ ٹولز ود ان منتھس آنا شروع ہو گئے. سو کہا یہ جا رہا ہے کہ 2023 اور 2024 میں سارے کنونشنل میڈیمز کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے ریپلیس کر دے گی. سو آپ کے خیال میں یہ ساری ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کے بعد آرٹسٹ اور کریٹیوٹی کا کیا رول رہ جائے گا؟ دیکھیں, انسان کو جب تک خدا نے دماغ دیا نا اس کا رول رہے گا. اور اگر ہم بالکل زیرو سے شروع کریں کہ جب ویل انوینٹ ہوا تھا تو لوگوں نے ٹانگیں کٹوا لی تھی, گھوڑے نہیں مار دیے تھے, صرف دماغ کے اوپر سے بوجھ ہٹ گیا تھا اور وقت بچ گیا تھا. تو میرا خیال ہے جو بھی آنے والی ٹیکنالوجی ہوتی ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور اس کے اندر اپنا پارٹ پلے کرنا چاہیے, اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے. اور اس کا خوف کوئی نہیں ہوتا ہے. اینڈ آف دا ڈے وہ ہیومن ڈیولپمنٹ کے ریفرنس میں ہی بنی ہے, اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے بنی ہے. اس کو جو چیزیں ہارم کرتی ہیں وہ خطرناک ہوتی ہے, اور اس کو ہارم کرنے والا ہم ہی ہیں اور کوئی نہیں ہے. جس طرح اکارڈنگ ٹو مارشل میکلوہن, ایک بڑے فیمس کینیڈین اسکالر ہیں, کہ میڈیا جو بھی ہے وہ اس کی انوینشن نائف کی طرح سے ہے یا ایک ایٹم بام کی طرح سے ہے, کہ جو بنا ہے اس کا پرپز فرق ہے, آپ اسے یوز کس طرح سے کرتے ہیں. تو اس کا یوز جو ہے ڈیفائن کرتا ہے. تو جب ٹیکنالوجی نئی آتی ہے تو جو پرانی ڈیفینیشن ہوتی ہے وہ چینج ہو جاتی ہے. آپ نے ری ڈیفائن کرنا ہوتا ہے اپنے آپ کو, اپنے اس ایکٹ کو, کہ اب یہ ہوگا کیا. کہ جب میرے کو خاص میں سینما بورڈ بنایا کرتا تھا اس ٹائم پہ پرنٹ کا فنامنا شروع ہو گیا تھا, نیا نیا آیا تھا. تو جو لوگ پرنٹ کی طرف آ گئے وہ ڈیولپ کر گئے, ان سے آئیڈیاز رکے نہیں اس کے, لیکن آئیڈیا کو ایگزیکیوٹ کرنے میں ہیلپ بہت مل گئی. جو امپاسبل لگتا تھا وہ ٹائم, آپ نے ریفرنس امیجز بھی دکھائے تھے, کہ ٹائم بہت بچ گیا. اور اسکل کی ڈیفینیشن جو ری ڈیفائن ہوئی, کہ اسکل بنانے کا نام نہیں ہے, اسکل سوچنے کا نام ہے. آپ سوچتے کس طرح سے اور کتنا آپ. جب میں ابھی کچھ سال پہلے پالو الٹو میں تھا تو وہاں میں نے نوٹ کیا کہ جتنے بھی لوگ تھے ہم سے ملنا چاہ رہے تھے اور بلا وجہ آ کے بات کرتے تھے کہ ان سب کے پاس پیسے بہت زیادہ ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آتا ان کو ملٹی پلائی کس طرح کرنا ہے. تو وہ صرف اور صرف کریٹیو لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. وہ پارٹیز میں اس لیے جاتے ہیں کہ نئے لوگوں سے ملیں, ان کے پاس کچھ آئیڈیاز اور ہم اس کو ملٹی پلائی کریں. تو آئی تھنک جو آئیڈیا ہے اس کی امپورٹنس سب سے زیادہ, ٹیکنالوجی آتی جاتی رہے گی اور بدلتی رہے گی, اس کے ساتھ کوپ اپ کریں گے آپ تو بہتر رہے گا. ایکسیلنٹ. اسی چیز سے ابھی جب میں اور سر راشد رانا ادھر بیٹھے ہوئے تھے تو ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ آرٹ کی ٹیکنالوجی کے بعد جو نئی نئی فارمز آ رہی ہیں اور اس سے کریٹیو آئیڈیاز کی فارمز شاید بدل جائیں گے, کریٹیو میڈیمز بدلیں گے. سر ہاؤ ڈو یو پٹ اے لائٹ آن دس ٹاپک کہ کیا رول رہ جائے گا کریٹیوٹی اور آرٹسٹ کا؟ 2 words, کن فیکون. ہو جا اور وہ ہو گیا. That's the ultimate automation. Wow. We shouldn't be scared of automation. Imagine we don't realize we are the most sophisticated machine on this planet, or any most sophisticated machine we know. It gives me goosebumps when just think of it for a second that a bunch of machines are sitting here and talking about themselves. Some robots even sleeping. So let's go back in history when those who are into art and art history, when the camera was invented in the mid 1800s, people were thinking that art has no role now, because art at that point had served the purpose of depicting surroundings or reality, depicting it, translating on a flat two-dimensional surface. And they thought that what will be the role of artists now? And look at the explosion of idea in the 20th century. One after the other, so many isms, so many concepts. And that all happened because of that one invention, because it opened so many avenues and so many possibilities for exploration. And I have no doubt in my mind
that the human mind is capable of amazing. We talk about how technology is becoming mind-blowing now. I think human capacity is more mind-blowing than that. Very nice. Fahad का perspective जानते हैं. Fahad, आप क्योंकि professionally you're directing a film at a very big scale. I saw the promo. You're using a lot of magic arm technology and all that advanced level filming for your this upcoming drama. तो technology बढ़ती जाएगी, आपकी अपनी creativity कहाँ जाएगी, मुझे ये नहीं समझ आ रही. मैं यही सोच रहा था कि एक फिल्म का concept आया and we wanted to do the film in Pakistan. And you know, I'm a quite nationalistic person, so I wanted to do it in Pakistan. But जब मैं पाकिस्तान में वो करने के लिए, you know, I started कि अभी कैसे होगी? We couldn't do it because we don't have some basic filmmaking tools. So then we decided that we want to shoot the whole project in Abu Dhabi. But saying that, अभी भी दो perspective हैं. There are two class of filmmakers. One is James Cameron and one is Christopher Nolan. Christopher Nolan is shooting on a film, and Cameron is shooting total digital images. But they both are literally in their own league and the top pioneer filmmakers at the moment. Such an interesting idea of coexistence of technology and robots and humans. Exactly, because आप वो भी देखें कि when Gemini Man एक film आई थी, Ang Lee ने direct की थी, उसके लिए they have to create Will Smith, which is totally AI generated, younger version of that. Yeah. But Ang Lee has to sit for 2 years to study each and every film and series created by Will Smith, to study the expressions, and then he dictated कि अच्छा यार मुझे ये चाहिए, this is my perspective, this is how he's going to behave when he's sad, this is how he's going to behave when he is angry. So the man is needed, whatever the robots and whatever technology is this, a man is needed, an idea is needed. अगर मेरे ज़हन में कोई idea ना होता कि मैंने एक film बनानी है, तो I cannot use magic bots, I cannot use Russian arms or this Trinity and these technologies which I am using for a film. So the need is from a man. The need is from a filmmaker. If he is in need, he will dictate the technology. Okay, this is what I need. Definitely, I also agree with that. Madam Sara से मैं ये बात अगला question इसी से related पूछूंगा कि अब ये फिल्म बना रहे हैं, उसमें टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल लेवल पे भी फिल्म्स बन रही हैं, टेक्नोलॉजी हेल्प कर रही है. सो आपके ख्याल में ये जो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो मशीन जनरेटेड वर्क है, जो कि घंटों भी नहीं लेती और हार्डवेयर भी नहीं ले रही, तो क्या इसके बाद क्रिएटिव प्रोफेशनल्स की परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी या फिर उनको क्रिएटिव एक्सप्लोरेशन में डिक्रीज़ एक थ्रेट हो जाएगा कि लोग क्रिएटिवली सोचना बंद कर देंगे, बल्कि हर काम मशीन से ही आइडिया भी लेना शुरू कर देंगे? व्हाट वुड यू थिंक अबाउट इट? उसमें ये कि एक ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक टूल है और उसमें आप फीड करते हैं और फिर उसके रिज़ल्ट में आपके सामने एक एल्गोरिथम आता है और ऑब्वियसली वो आपको आंसर करता है, विजुअल की फॉर्म में करे या उस तरह. मेरे ख्याल में उसको हमें यूज़ करना आना चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी को हमेशा एम्ब्रेस करना आना चाहिए. और उसको मैं एक एग्जांपल आपको ग्राफिक डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से दे देती हूँ कि मैंने एक नई आइसक्रीम लॉन्च करनी है, ठीक है, और मैंने उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अपने सॉफ्टवेयर में जितने पाकिस्तान में ऑलरेडी लॉन्च ब्रांड्स हैं वो मैंने फ़ीड कर दिए हैं. मैंने इंटरनेशनल भी सारे ब्रांड्स फ़ीड कर दिए हैं और मैं देखूं कि उसका रिज़ल्ट क्या आता है. दैट कुड बी माई स्टार्टिंग पॉइंट कि दिस इज़ व्हाट हैज़ ऑलरेडी बीन डन एंड दिस इज़ व्हाट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर हैज़ कम अप. दिस इज़ वेयर माई थिंकिंग प्रोसेस देन शुड बिगिन. Excellent. So this is how, यानी हम टेक्नोलॉजी को embrace भी करें बट हम उससे फ़ायदा भी उठाएं, because machine has also been made by man और बेहतरीन मशीन दिमाग ही है, हमें बस यूज़ करना आना चाहिए उसको. सर राशिद राना से मैं इस पे बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे ज़हन में आया. आई वाज रीडिंग एन आर्टिकल, पेरिस के अंदर ऑलमोस्ट $4.3 मिलियन की एक अभी रिसेंटली 2022 में ऑक्शन में एक मशीन जनरेटेड आर्ट वर्क सेल हुआ. आई हैव फॉरगॉटन द नेम ऑफ द आर्टिस्ट, और लेकिन उसका कहना ये है कि आदमी क्रिएटिव नहीं है. आदमी जो है ना वो पुराना डेटा इस्तेमाल कर रहा है
जितना को उसने अपने एनवायरनमेंट में देखा है, नेचर में देखा है, अल्लाह ताला ने उसका उतना को डाटा इस्तेमाल कर रहा है. असल क्रिएटिव तो मशीन है. सो व्हाट विल बी योर टेक ऑन कि मशीन जनरेटेड आर्ट के थ्रू क्रिएटिव प्रोफेशनल्स की परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी या उनकी क्रिएटिव डिज़ायर और क्रिएटिव एक्सप्लोरेशन किल हो जाएगी? जी मैं जैसे पहले कहा कि जब when you presented with new challenges, then that is when the human capacity is tested. Then it opens up more possibilities. And this is just too early days, bit of an early days to comment on something which was auctioned, because that is not necessarily the criteria that it's a great piece of art. We have a tendency as humans to see things, value things which are rare. And then when something will become in abundance, then it will lose its value. Then we'll be looking for something else. But talking about creative productivity, I think, yeah, that's given. And if we can just move a little bit away from art, or what we call art with a capital A, I think this is amazing stuff happening on internet and social media. I think that has widened the scope of what we call creative visual production. It's really, really fascinating. And then what I like about it is the aspect of democracy. Things have been democratized in a big way. Imagine the second half of the 20th century, the huge divide between the icons, popular icons, and their followers. And now the divide is like so blurry that you have people with 10 followers and 100 and 1,000 and million and 10 million, to the extent that an ordinary girl is being copied by Madhuri Dixit. That's the reversal of complete roles. I think it's just that aspect of technology, I think, is really heartening the democratization of information and ideas. Excellent, excellent. So we are short of the time, but the last question is really very important. और उसका ताल्लुक democratization से बहुत ज़्यादा है. The question is, मैं गुड्डू से शुरू करना चाहूँगा, because industrial perspective पहले जानते हैं, फिर academic perspective जानते हैं इसके ऊपर, कि how prepared are we as community, industry, as institutes for all this change of this new technologies and adapting new emerging technologies? So what is your take on this? I think मैं इसका कोई ऑथेंटिक जवाब तो नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि मेरे पास कोई सर्वे नहीं है और कोई बिग डाटा नहीं है. लेकिन एज एन इंडस्ट्री प्लेयर और एज अ बिजनेस, जितने भी बच्चे हमारे पास आते हैं या हमारे बच्चे या इर्द गिर्द के बच्चे, उनमें जो मैंने कॉमन चीज़ ज़्यादातर जो देखी है कि वो एक बबल में बंद आते हैं, और शायद उनको बबल में रहना ही सिखाया जाता है कि जो हम आपको बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं. सबकी बात नहीं कर रही, ऑफ कोर्स मैं एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हूँ. और उस बबल में रहने की वजह से ज़ाहिर है कि वो कभी इनोवेट माइंडसेट नहीं रख सकते, वो इवॉल्व नहीं होते, वो अपग्रेड नहीं होते. सो सबसे ज़्यादा जो हर्डल है वो माइंडसेट है. आपकी इनोवेशन के रास्ते में सबसे पहली रुकावट ये है. और आपके ख्याल में जो इंस्टीट्यूट्स हैं या जो इंडस्ट्री है या जो बिजनेसेस हैं, वो इनोवेटिव माइंडसेट फर्टाइल नहीं कर रहे हमारी सोसाइटी में? सो मैं फ़हद से, अब टाइम शॉर्ट है, बार बार वो मुझे इशारा कर रहे हैं. सो क्विकली फ़हद, आप भी एक फ़िल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक ड्रामा इतने बड़े साइज़ का प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो लोकली टैलेंट मिलने में इंडस्ट्रियल लेवल पे क्या चैलेंजेस हैं आपको? I think so. वही बात है कि the people are not ready to adapt. We human beings tend to adapt, but मुझे लगता है कि शायद जो the generation which is coming, उनकी adaptability जो है वो थोड़ी सी ज़रा, वो जो AI है वो 2 सेकंड में इमेज कर लेती है ना, तो the people want the fruit of the hard work in 2 seconds as well. वो patience और consistency जो है, I think so this is something which is lacking. Okay, let's take this question to the future makers. Dr. Sara, आपसे शुरू करते हैं फ्रॉम द इंस्टीट्यूट पर्सपेक्टिव, कि जहाँ तक मुझे याद पड़ता है 2098 में जब हम यूनिवर्सिटी गए थे, 1985 का निसाब चल रहा था, और आज भी मैं, जैसे गुड्डू ने बताया, कि हमें बहुत चैलेंज आता रहा है लोगों से डिस्कस करने का, बच्चों को हायर करने के लिए. सो व्हाट इज़ द प्रिपरेशन एट द एकेडेमिया एंड? सो
ان پرٹیکولر آپ تینوں سے میں ایکڈیمک پریپریشن جاننا چاہوں گا. اینڈ آف کورس وی کین آلویز کولیبریٹ, اینڈ پرپز بھی یہی ہے کہ انڈسٹری اور ایکڈیمک پارٹنرشپس کیسے بلڈ کی جا سکتی ہیں, کیا چل رہا ہے. بیکاز ہمیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ڈالر چھاپنا آتا ہے, تو وہ ڈالر چھاپنے میں ہرڈل بڑی آتی ہے, جیسے کہ گڈو نے کہا. سو پلیز. میرے خیال میں ایکڈیمیا اینڈ دا انڈسٹری شوڈ ورک ہینڈ ان ہینڈ. ایک چیز جو میں نے این سی اے سے سیکھی تھی, این سی اے نے مجھے سوچنا سکھایا تھا, این سی اے نے مجھے کمپیوٹر نہیں سکھایا تھا 20 ایئرس بیک. وہ میں نے ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں جا کے 1 مہینے میں سیکھ لیا تھا. تو میرے خیال میں ایکڈیمیا کا کام, انسٹیٹیوشنس کا کام ہونا چاہیے کہ بچوں کو آئیڈیا جنریٹ کرنا سکھائیں, اور پھر انڈسٹری کا رول ہینڈ ان ہینڈ یہ ہونا چاہیے کہ وہ ان کو ٹیکنالوجی کے ساتھ کریں. اس لیے وی نیڈ ٹو سائن اے لاٹ آف ایم او یوز ود انڈسٹری پیپل, کہ انڈسٹری کے لوگ آ کے بچوں کو ٹیکنالوجی پڑھا رہے ہوں, اور جو ٹرولی ایکڈیمیا کے ہیں وہ ان کو سوچنا سکھا رہے ہوں. آئی تھنک that is what we all need. Excellent approach. I think that's what we need. Coaching and the teaching concept. That's just like foreign universities. Sir, please. میرا تو خیال ہے ٹیکنالوجی سے لوگ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹیکنالوجی کمز ود فیسلٹی اینڈ تھریٹ. ایک میرا خیال ہے ایک سمجھدار آدمی کی وہ غلام ہے, اور جو سمجھدار نہیں ہے اس کی وہ باس ہے. تو اگر آپ اسے استعمال کریں تو استعمال آپ کر کس طرح سے رہیں یہ امپورٹنٹ ہے. اور جہاں تک اسکول اداروں کی بات ہے کہ وہ اس چیز کے لیے تیار ہیں, کیا کر رہے ہیں, تو میرا خیال ہے اس ملک کی بڑی انفارچونیٹ پوزیشن ہے کہ جو اداروں کو, گورنمنٹ کے اداروں کو جو اسٹینڈرڈ دینے چاہیے, پرائیویٹ ادارے ان کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ ایسے ہونا چاہیے آپ کو. تو پرائیویٹ اداروں کا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے, وہ ملک کو اس طرف لے کے جانا چاہیں گے. لیکن اب ملک کی اپنی کوئی آئیڈیالوجی ہو تو قوم اس طرف جا سکتی ہے اور ہم قوم بن سکتے ہیں. لیکن اگر اس میں وہ سوچنے والے لوگ بیٹھے ہوں اور ایگزیکیوٹ کرنے والے, ٹیکنالوجی ہیلپ ضرور کرتی ہے آئیڈیا جنریٹ کرنے میں اور ایگزیکیوٹ کرنے میں, لیکن وہ اکیلی سوچتی نہیں ہے. سوچنے کا کام آپ ہی نے کرنا ہوتا ہے. جتنا آپ نے اے آئی کے امیجز دکھائے وہ آپ نے پرومپٹ کیا تھا اسے, آپ کے پرومپٹ کرنے پہ اس نے بنایا, اس نے خود سے کچھ نہیں بنایا. ٹھیک ہے, تو آئی تھنک آنے والی جو بھی چیزیں ہیں اس کو استعمال کرنے میں کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے. اس کو ایسا استعمال کریں کہ وہ اپنے آپ کو کمتر محسوس کریں. Okay, excellent. So the BNU perspective. ٹیکنالوجی سے ڈرے یا نہ ڈرے, اٹس دیئر ٹو اسٹے. اٹ ہیز آلویز ہیو. پہیے کے زمانے سے ہے. ٹیکنالوجی از ناٹ جسٹ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی, سو اٹس آلویز گوئنگ ٹو بی دیئر. اینڈ دین اسپیشلی ان دا 21st century, what is really required apart from the technology, it's there anyway, it's there. What you need is a critical mind and to be able to connect the dots. The old school methodology of 20th century of being specialized in one thing is not going to help. You should be able to have need to come up with questions and inquiries for which the answer you'll be looking for, they may be multidisciplinary, cross-disciplinary, or even transdisciplinary. We have recently started at BNU a new program called BA Honours IDA, which stands for Interdisciplinary Expanded Design and Arts. Wow. It's a program for the new generation of creative minds, where they're required to take courses in disciplines other than art and design and cull knowledge from various different forms of knowledge and expand the notion of what art and design can be. At this point, I will just like to take a very quick opportunity, because I think in this conference most of the audience is from the tech world and startup world. And I think somebody asked in the previous session a question about the challenges or the future of startup industry in Pakistan. I think you have an edge, guys, that the people from the first world do not have. You know all what people in the first world know, but you have a panoramic view of the world even while living in a city like Lahore. You live 17th, 19th and 21st all centuries at the same time. Something that coexists in the entire world in the global south. But if you belong to the major metropolis of the global south, such as Cairo, Delhi, Lahore, you have an edge. You have a much more wider knowledge of how the world functions. And I am pretty positive that many great ideas in the 21st century are going to emerge from the global south. Very well said. Thank you very much, all honorable teachers and professionals. یہ ٹاپک میرا خیال ہے کہ ایسا ہے کہ
جس کو گھنٹوں ہم سارے بیٹھ کے ڈسکس کر سکتے ہیں, اور شاید دس از دا رائٹ ایئر جس میں ہمیں ڈسکس کرنا بھی چاہیے. سو ایز ڈاکٹر سارا سیڈ, لیٹس بلڈ collaborations of academia, coaches with the teachers, and let's think about the future of academic systems in Pakistan. Just like Sir Arif Naeem and Sir Rashid Rana said کہ ہمارے پاس زیادہ پوٹینشیل ہے, بیکاز جو انوویشن اکانومی ہے, میں ہمیشہ انٹرنیشنل کانفرنسز پہ جا کے بھی ورڈ یوز کرتا ہوں جگاڑ کا. Innovation economy is all jugaad economy. I borrowed it from an Indian peer. لیکن ایسا زبردست آئیڈیا ہے کہ ہم کھوتے کے اوپر جو ہے وہ ٹرک باندھ کے نکل جاتے ہیں. وہ جو انوویشن, وہ جو جگاڑ ہماری سوسائٹی اور ہمارے اندر ہے, if structured properly through academia, we can be the future. So let's conclude this panel and let's not end this discussion. Thank you very much once again, and I would love to thank Future Fest on behalf of the whole industry and my colleagues. Thank you.